Hello everyone, welcome back again. So students, today in this session we will do our exercise 5.1. Okay, what is that? 5.1. So before starting this video, just revise your all the topics. Okay, so at least watch your introduction video 2 times, okay, which I was provided you previously. Just watch it, okay. That video is very helpful to all of you to solve your exercise 5.1. okay. So before starting this video, revise your previous video, that is your introduction video of chapter lines and angles. Okay, so let's start from the first question. Okay, and what's your first question? Find the complement of each of the following angles. So here you have to find out the complementary angles of angle 20, angle 63 and angle 57. So we already know that what is the meaning of the complementary angles. The angles whose sum is 90 degree. Okay. Any two angles whose sum is 90 degree, that is your complementary angle. So here you have angle 20. Okay, so you have to find out the complementary angle of angle 20. Okay, आपको 20 का complementary angle find out करना है. So what is the complementary angle of 20? Let's check. The sum of measure of complementary angle is 90. Okay, so we already know that complementary angle, sum of two complementary angles is equals to 90 degree. So if one angle is 20, okay, suppose you have two complementary angles, one is 20 and another one is x. You have to find out the value of x. So sum of both angles are 90 degree. Clear? It means x plus 20 is equals to 90. आपके पास दो एंगल्स हैं, उनका सम 90 डिग्री है. सो x is equals to x plus 20 is equals to 90 degree. So what is the value of x? X is equals to 90, 20. Okay, why minus 20? Because here it's positive, so when you shift it here, it becomes negative. So the value of x is 90 minus 20. So it means when you subtract any one complementary angle by 90 degree, you will get another complementary angle. Okay, so if your first angle is 20 degree, so your another angle is 90 minus 20 and that is 70. Clear? 70 plus 20, 90. So 70 and 20 both are the complementary angles. Similarly, for next angle, that is 63. Okay, so 90 minus 63, that is equals to 27. Clear? So the complementary angle of 63 is 27 degree. Okay, and you can check it also. 63 plus 27, 7 plus 3 10, 0 carry 1, 6 plus 2 8 plus 1 9. So that is 90 degree. Clear? So it means the complementary angle of 63 is 27. Why? Because the sum of 27 and 63 is equals to 90 degree. Now come to the next part, that is 57. So what is the complementary angle of 57? 90 minus 57 is equals to 33. So 57 and 33 both are the complementary angles. So why? Because the sum of 57 and 33 is equals to 90 degree. Now come to the next question, that is your question number 2. Find the supplement of the following angles. So in previous question, that is complement angles. Okay, so the sum of two angles is 90 degree, but here the angles is supplementary angles. So it means here the sum of two angle is 180 degree. Okay, what is the meaning of supplementary angles? When the sum of two angle is equals to 180 degree. जब दो एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, so that is your supplementary angle. So it means here we have to subtract the angle by 180. Clear? हम पहले क्या कर रहे थे? हम पहले 90 से subtract कर रहे थे, अब हम किससे करेंगे? 180 से. Why? Because the sum of two supplementary angles is equals to 180 degree. Clear? So here the first angle is 105. So 180 minus 105 is equals to 75. So your supplementary angle of 105 is 75. Clear? Why? Because sum of 105 is 75 is equals to 180. Clear? So अगर आपके पास दो एंगल में से एक एंगल है और आपको पता है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इट मीन्स दोनों का सम 180 डिग्री है. सो आप एंगल को 180 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आपको दूसरा एंगल मिल जाएगा. नेक्स्ट इज 87.
Clear? So you have two supplementary angles. If one is 87, so another one is simple, that is 180 degree. Okay, ये आपका पूरा जो है that is 180 degree. If you subtract 87 from 180, अगर आप 180 में से 87 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? अनदर एंगल. ये पार्ट आपको मिल जाएगा. इस पूरे पार्ट में से आपने इतना पार्ट कट कर दिया तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा. क्लियर? सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 87 बाय 180 डिग्री यू विल गेट 93. क्लियर? So it means the supplementary angle of 87 degree is 93 degree. Clear? Now same, next angle is 154. So what is the supplementary angle of 154? 180 minus 154, and that is equals to 26 degree. Now come to the next question, question number 3. Identify which of the following pairs of angles are complementary and which are the supplementary. So here you have 6 questions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and each question you have pair of 2 angles. आपको यहाँ पे 2 angles दिए हैं and you have to identify that these pair of angles are supplementary or complementary. So how you can find out that? It's very simple. Just add these 2 angles. Clear? These 2 angles, add it. Okay. If the sum of these 2 angles are 90 degree. Clear? So if the sum of these 2 angles is 90 degree, it means these angles are complementary angles. Okay. And if the sum is 180 degree, अगर इन दोनों एंगल्स में से किसी भी पेयर का जो सम है 180 डिग्री आता है, so that is your supplementary angle. ओके, इट्स वेरी सिंपल. आपको जो पेयर्स दिए हैं आप उनको ऐड कीजिए. अगर इनका एडिशन 90 डिग्री के इक्वल्स टू में आता है तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. अगर वो 180 डिग्री के इक्वल्स टू में आता है सो दैट इज़ योर सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्लियर? सो लेट्स चेक इट फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. 65 प्लस 115. So 115 plus 65 is equals to 180 degree. Clear? So it means these angles are supplementary angles. Next is 63 plus 27. So 63 plus 27 is equals to 90 degree. It means these angles are complementary angles. Next is 112 plus 68. So 112 plus 68 is equals to 180 degree. It means these angles are supplementary angles. Similarly, the sum of 130 and 50 is equals to 180 degree. Again it means it's a supplementary angle. 45 plus 45 90 degree. So these are the complementary angles. 80 plus 10 90 degree. So these are the complementary angles. So student, here is your answer. Students, here you have your answer. Just pause your video and write down the answers in your notebook. Okay, and if you have any doubt in any question, please just inform to me, comment me in the comment section and I will provide you a separate video. Just pause your video and write down the answers in your notebook with neat and clean handwriting. Listen, one more thing. If you have any diagram in any question, just draw these diagrams also. Okay, you have to draw these diagrams also. Okay, in your notebook. Now come to the next question, question number 4. Find the angle which is equals to its complement. Okay, so here you have to find out the angle whose complementary angles is equals to the angle. It means, suppose that if your angle is x, it means suppose that if your angle is x, okay, so its complementary angle is also x. Clear? So let's start. Let the angle be x. So suppose that your angle is x. Angle x जो है वो क्या है आपका, एक ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या है, x ही है. Clear? The complementary angle, so complement of these angle is also x.
the sum of the measure of the complementary angle pair is 90 degree. Okay, so sum of the two complementary angles is 90 degree. Okay, complementary angle 90 degree and supplementary angles 180 degree. So it means if the angle x and its complementary angle is also x, so the sum of these two angles are 90 degree. Why 90 degree? Because it's complementary angles. Because it's complementary angle. Now x plus x, so here we have 2x. Okay, so x plus x equals to 2x. 2x equals to 90 degree. X is equals to 90 upon 2. Okay, here the relation is multiplication, so shift it here in dividation. 90 upon 2 and that is 45 degree. Okay, so 45 degree it's your angle whose complement is also 45 degree. Clear? 45 डिग्री जो आपका एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री होगा. लेट्स चेक. 45 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. इट मीन्स बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो 45 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो भी क्या होगा 45 होगा. सो योर आंसर इज 45. Now come to the next question, that is your question number 5. Find the angle which is equals to its supplement. Okay, this question is similarly to the question number 4, but difference is that in question number 4 the angles are complementary and here the angles are supplementary angles. So same process, let the angle is x, so its the supplementary angle is also x. Why? Because both supplementary angles are equal. So if one is x, so another one is also x. So according to the condition, the sum of the measures of a supplementary angle pair is 180 degree. It means x plus x is equals to 180 degree. So x plus x 2x, 2x equals to 180, 2x equals to 180 degree. Now 2x equals to 180 degree. So x is equals to 180 upon 2. So 2 9s are 18 and 0 0. So the value of x is 90 degree. Clear? It means the supplementary angle of 90 is 90 degree and 90 plus 90 is 180 degree. It means your answer is correct. Now come to the next question, question number 5. In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. Okay, so here as you can see here, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. Both, that is your 180 degree angle. Clear? So angle 1 and angle 2 are supplementary angles. Clear? If one is decreased, what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? Okay, अगर आप क्या करते हैं अपने angle 1 को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. Clear? So now that is your angle 1. Suppose that. Okay. सो आप एंगल 2 में ऐसे कौन से चेंजेस करेंगे कि आपका ये जो एंगल का पेयर है ये बाद में भी क्या रहे सप्लीमेंट्री रहें. सो सिंपल, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 degree, okay, and two angles are supplementary angles and one angle is decreased, so you have to increase another angle. अगर आपका एक एंगल छोटा हो रहा है तो आपको ऑब्वियसली दूसरे एंगल को बड़ा करना होगा. ओके, सो इफ angle 1 is reduced, then you have to increase the angle 2. So what's your answer? Angle 1 and angle 2 are supplementary angles. If angle 1 is reduced, then angle 2 should be increased by the same measure, so that this angle pair remains supplementary. Okay, so अगर आपका क्या है angle 1, suppose that आपका 15 डिग्री क्या हो रहा है reduce हो रहा है. ओके, आपका एंगल 1 जो था वो 15 डिग्री कम हो रहा है. सो यू हैव टू इंक्रीज एंगल 2 15 डिग्री. आपको एंगल 2 को 15 डिग्री बड़ा करना होगा. क्लियर? तभी तो वो बैलेंस रहेगा. अगर एक एंगल छोटा हो रहा है तो आपको दूसरे एंगल को बड़ा करना होगा उतने ही डिग्री जितना वो छोटा हो रहा था. क्लियर? तभी उनका जो एंगल का सम है वो 180 डिग्री रहेगा. अदरवाइज सपोज दैट अगर आपका एंगल 1 जो है वो 15 डिग्री रिड्यूस हो गया और आपने एंगल 2 को सिर्फ 10 डिग्री ही इंक्रीज़ किया तो आपका 5 डिग्री का क्या होगा, एक गैप हो जाएगा और आपका कंप्लीट 180 डिग्री एंगल नहीं बन पाएगा. क्लियर? सो योर आंसर इज यू हैव टू इंक्रीज द एंगल 2 बाय द सेम मेजर्स.
सपोज अगर आपका एंगल 1 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री डिक्रीज हुआ है तो आपको एंगल 2 को क्या है उतना ही इंक्रीज करना होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। Can two angles be supplementary if both of them are acute, obtuse and right? Okay, so the question is that कि आपके दो एंगल्स जो हैं क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे अगर दोनों ही एक्यूट हों, दोनों ऑब्ट्यूस हों और दोनों राइट एंगल हो। सो आपको क्या करना है, आपको दो ऐसे एंगल्स लेने। सो हियर यू हैव टू चेक दैट two acute angles will be a supplementary angles or not, two obtuse angle will be a supplementary angles or not, or two right angles will be a supplementary angles or not. Okay, so first acute angle, no, acute angle is always lesser than 90 degree. It can be observed that two angles even of 890 cannot add up to 180 degree. Therefore two acute angles cannot be in a supplementary angle pair. What is the meaning of that line? Acute angles are less than 90 degree. Okay, so less than 90, suppose you have 89 degree angle, clear? So you have, so two angles means, so suppose you have two 89 degree angles, clear? So 89 plus 89, that is 178, clear? And 178 is less than 180 degree, clear? So आप अगर दो acute angles को add करते हैं तो आपका कभी भी 180 डिग्री एंगल नहीं बन सकता है, क्लियर? चाहे आप कितने भी मैक्सिमम एक्यूट एंगल्स को ऐड कर दीजिए, बिकॉज आपके एक्यूट एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होते हैं, क्लियर? तो आप 90 डिग्री से कम कोई से भी एंगल ले लीजिए, उनके सम करने पे आपको कभी भी 180 डिग्री मिलना पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट वन इज नो। अनदर वन इज ऑब्ट्यूस एंगल। सो ऑब्ट्यूस एंगल्स which are greater than 90 degree, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हैं, that is your obtuse angle. So suppose your angles are 91 डिग्री and 91 डिग्री, हम 90 से जस्ट बड़ा ले लेते हैं। So 91 plus 91 that is your 182 डिग्री, क्लियर? सो अगर आप मिनिमम ऑब्ट्यूस एंगल भी लेते हैं तो वो क्या होता है आपका 180 डिग्री से बड़ा जाएगा, इट मीन्स दैट इज ऑल्सो नो। So your answer is no, obtuse angle is always greater than 90 degree. It can be observed that two angles even of 91 degree will always add up to more than 180 degree. आप अगर 91 डिग्री को भी ऐड करते हैं तो हमेशा 180 से ज़्यादा जाएगा। Therefore two obtuse angle cannot be in a supplementary angle pair. दो obtuse angle क्या है supplementary angle के पेयर में नहीं हो सकते हैं। अगर आपके पास दो supplementary angles का पेयर है, ओके, अगर आपके पास दो ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री है तो उनमें दोनों एक्यूट एंगल होंगे तो भी पॉसिबल नहीं है और दोनों ऑब्ट्यूस एंगल होंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, क्लियर? नाउ थर्ड कंडीशन इज राइट एंगल्स। सो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल, क्लियर? सो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्लियर? सो आपका 90 के जो एंगल्स हैं वो क्या करेंगे, एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। लुक एट हियर, दैट इज योर 90 डिग्री, दैट इज योर अनदर 90 डिग्री एंड together they will make a 180 degree complete supplementary angle, clear? So yes, right angles are 90 degree and 90 plus 90 is 180 degree. Therefore two right angles form a supplementary angle pair together. So our third condition is correct. Now come to the next question, that is your question number 8. An angle is greater than 45 degree. Is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree? आपके पास एक एंगल है जो क्या है 45 डिग्री से क्या है बड़ा है, that is greater than 45 degree. Is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree? अब इसका जो complementary angle होगा, क्लियर, वो क्या होगा, इस 45 डिग्री से छोटा होगा, उससे बड़ा होगा या उसके इक्वल टू में होगा? सो यू हैव टू चेक दैट, ओके? सो लेट्स चेक इट। Let A and B are two angles making a complementary angle. Suppose that you have two angles A and B, okay? These are the complementary angles and A is greater than 45 degree, clear? आपने कंडीशन क्या कही थी?
So what is the condition here? The angle is greater than 45 degree. So suppose that angle A is greater than 45 degree. So complementary angles are equals to 90 degree. So angle A plus angle B is equals to 90 degree. Now shift your angle A here. So it becomes B equals to 90 minus A. B equals to 90 minus A. So as you can see here, A is greater than 45 degree. Clear? So A is greater than 45 degree. So when you subtract any number which is greater than 45 degree by 90, suppose that your angle is 46. Clear? 46 is greater than 45. So now subtract 46 from 90 and you will get 44. Okay. So आपने जस्ट 1 डिग्री बड़ा एक एंगल लिया जो 45 डिग्री से क्या है, जस्ट 1 डिग्री बड़ा था, दैट इज 46. क्लियर? सो नाउ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 46 इज 44. क्लियर? सो विच इज लेस देन 45 डिग्री. Clear? So when you subtract A from 90 degree, you will get a number which is less than 45 degree. Okay? Why? Because the sum of two subcomplementary angles are equals to 90 degree. So therefore B is lesser than 45 degree. आपका B जो होगा वो 45 से छोटा होगा. Now come to the next question, that is your question number 9. Is in the adjoint figure, in this figure you have to check that is angle 1 adjacent to angle 2, is AOC adjacent to angle AOB, AOE, do angle COE and angle EOD form a linear pair, are angle BOD and angle DOA supplementary, is angle 1 vertically opposite to angle 4, what is the vertically opposite angle of angle 5? So we will check it one by one. Okay. So what's your first question? Angle 1 is adjacent to angle 2. Okay. So where is your angle 1? Here is your angle 1. Okay. And this one is your angle 2. And you have to check that these two angles are adjacent to each other or not. So first, what is the condition of adjacent angles? First, they will share one common vertex. Second, they have one common arm, and third condition, the non common arm on other side. Okay, दोनों साइड इसमें क्या होगी, non common arm होगी. So let's check for the first condition. This one O, that is your common vertex. Okay, ये आपके AOC angle 1 and COE angle 2, दोनों में आपके जो है O क्या है, एक common vertex है. Clear? So first condition is satisfied. Next is common arm. इनमें एक common arm होनी चाहिए. So that is your OC. OC is common arm. Okay, ये दोनों angles में OC एक common arm है. And third condition is non-common arms on both sides. Okay, दोनों side में आपकी क्या होंगी, non-common arm होनी चाहिए. So here third condition is also satisfied. OE and OA ये आपकी क्या है, नॉन कॉमन आर्म है. क्लियर? जो दोनों साइड हैं कॉमन आर्म के. इट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स. ओके, आपके एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं वो क्या हैं, दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स हैं. नेक्स्ट इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE. सो वेयर इज योर एंगल AOC एंड AOE? AOC and AOE. So you have to check that the angle 1 and 2 both. Okay, जो आपका एंगल 1 है एंड एंगल 1 and 2 दोनों एक साथ क्या ये एडजेसेंट एंगल होंगे? एंगल AOC एंड एंगल C एंड एंगल AOE, क्या ये आपके एडजेसेंट एंगल हैं? सो फर्स्ट कंडीशन कॉमन वर्टेक्स, so here they have common vertex O. Clear? Second condition common arm, so yes they have one common arm and that is OA. ये जो आपकी OA है that is your common arm. Clear? जो दोनों में है, ये आपके AOC में भी है. Clear? ये आपके AOC में भी है और AOE में भी है. Which one? OA. Now third condition is
नॉन कॉमन वर्टेक्स, नॉन कॉमन आर्म ऑन द अदर साइड। दोनों साइड में क्या चाहिए आपको? नॉन कॉमन आर्म चाहिए। सो दीज टू नॉन कॉमन आर्म्स OC एंड OE, ये दोनों आपकी क्या है? नॉन कॉमन आर्म है। क्लियर? बट ये तो एक ही साइड में। क्लियर? सो आपकी थर्ड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। सो इट मीन्स एंगल AOC and angle AOE, these two angles are adjacent, these two angles are not adjacent angles. Okay, ये आपके adjacent angles नहीं है। Now third condition is angle, now third question is, do angle COE and angle EOD form a linear pair? COE and EOD, COE and EOD. So you have to check that they are making linear pair or not. So what is the definition of linear pair? First, common vertex, second, common arm, and third, non-common arms are in opposite direction. Clear? In introduction video we already discussed that what is the meaning of linear pair. Linear pair हम किसे कहते हैं? एक ऐसे दो एंगल जिनके कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो अपोजिट साइड में जाती हैं। अगर एक की इधर जाती है तो दूसरे की दूसरी डायरेक्शन में जाती है। क्लियर? एंड अब क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है और एक 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। सो लेट्स चेक इट। सो वेयर इज योर कॉमन वर्टेक्स? हियर O. O इज योर कॉमन वर्टेक्स। ओके, नाउ कॉमन आर्म OE, OE जो है वो आपकी कॉमन आर्म है। क्लियर? ये आपके COE में भी है और EOD में भी है। क्लियर? नाउ नॉन कॉमन आर्म्स, वेयर इज योर नॉन कॉमन आर्म्स? दैट इज योर नॉन कॉमन आर्म OC एंड OD। OC और OD जो है ये आपकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं और ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर? अगर एक ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे जा रही है, एक नॉर्थ टू साउथ, if one is east so another one is west. So ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं। क्लियर? सो हमारी तीनों कंडीशन जो हो रही हैं वो सेटिस्फाइड हो रही हैं और ये आपकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म करके एक 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं कम्प्लीटली। सो दैट इज योर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर? सो थर्ड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एंगल COE and angle EOD form a linear pair. Clear? Now question number 4, are BOD and DOA is supplementary? BOD and DOA, BOD and DOA. Okay, these two angles, angle 4 and angle 5, you have to check that these angles are supplementary angles or not. So your angle BOD and DOA, they are making one straight line, this one. क्लियर? ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। सो ऑब्वियसली दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज द सम ऑफ एंगल 5 एंड एंगल 4 इज 180 डिग्री। क्लियर? दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर, ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं एंड द एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर्स आर 180 डिग्री। क्लियर? सो सिंपल, एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाई? बिकॉज द सम ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, angle 1 is vertically opposite to angle 4. So where is your angle 1? Angle 1 is here at angle 4. These are the vertically opposite angles or not? Yes, the angle 1 and angle 4, these are the vertically opposite angles. Why? Because these angles are formed by two lines which are intersected to each other at O. So here two lines are DC and BA. They are intersecting with each other at O. Clear? So these are the vertically opposite angles, angle 1 and angle 4. So your fifth condition is also satisfied. Now next is, what is the vertically opposite angle of angle 5? जो आपका angle 5 है इसका vertically opposite angle क्या होगा? So angle 5, these are the two lines AB and CD. Clear? AB and CD, they are intersected with each other at O. So one pair of vertically opposite angles are angle 1 and angle 4.
and another pair of vertically opposite angles are angle 5 and angle 2 and 3 together. So the right answer is angle COB. Angle COB, this one. This one. Clear? This angle, that is the vertically opposite of angle 5, or you can say that angle 2 plus angle 3 is equals to angle 5 because it's the vertically opposite angle of angle 5. So students, here is your answers. Just pause your video and write down these answers in your notebook. Clear? And you have to do your work with neat and clean handwriting. And if you have any doubt, just comment with the comment section. Okay. Now come to the next question, that is your question number 10. Indicate which pair of angles are vertically opposite angles and linear pair. So first check it for vertically opposite angles. So here you have two lines, this one and this one. Clear? Which are intersected to each other here. Clear? So you have to find out the vertically opposite angles. So here the vertically opposite angles are, the first one is angle 4 and angle 1. These are the first, that is your first pair of vertically opposite angles, and another pair is angle 5 and angle 2 plus 3. Clear? First set is this one, angle 4 and angle 1, and another set is this one, angle 5 and angle 2 plus 3. Clear? That is your vertically opposite angles. Now next question is, you have to check that linear pairs. Okay, so linear pairs, angles which formed 180 degree angle or a straight line. So linear pair, that is your straight line. So these two angles are angle 4 and angle 5. They are linear pair of angles. Clear? Now check it for the another pair. This one, that is your straight line. Okay, so angle 1 and angle 5, that is your also linear pair. Clear? So angle 1 and angle 5 जो है ये आपके कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं, इनकी एक कॉमन आर्म है. ओके, एंड दोनों जो आपके नॉन कॉमन आर्म है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं. सो दैट इज योर अनदर पेयर ऑफ linear pair angles, that is angle 1 and angle 5. Okay, so here is your answers. Now come to the next question number 11. Your question number 11, and the question is, in the following figure is angle 1 is adjacent to in the following figure is angle 1 is adjacent to angle 2, give reason. So you have to check that angle 1 is adjacent to angle 2. So adjacent angle, they have common vertex, common arm and two opposite non-common arms. Clear? So in angle 1 and 2 there is no कॉमन वर्टेक्स, इनमें कोई कॉमन वर्टेक्स है ही नहीं. इनकी वर्टेक्स यहाँ है, इनकी वर्टेक्स यहाँ है, तो ये कॉमन वर्टेक्स है. इनकी फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है. सो इट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. राइट डाउन इट इन योर नोटबुक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स x, y and z in each of the following. So here you have two figures, figure 1 and 2. And you have to find out the value of angle x, y and z. X, y and z. Clear? How? Let's check. So in figure 1, 55 degree angle and x. These two angles are vertically opposite angles. Clear? आपकी ये जो two lines हैं ये यहाँ पर कट हो रही हैं. Okay. So आपके दो vertically opposite angles बन रहे हैं, this one and this one. So if that is 55 degree, so obviously that is also 55 degree angle. So the value of angle x is equals to 55 degree. Clear? Angle x is equals to 55 degree. That is your linear pair of angle. Clear? Angle y and angle x,
these are the linear pair of angles, or you can say that it's a straight angle. So the sum of angle x and angle y is equals to 180 डिग्री. आपका एंगल x और एंगल y है, इनका सम 180 डिग्री होगा. क्लियर. सो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री and angle x is 55 degree. So 55 plus y equals to 180 degree. Clear. Shift it here, subtract 55 from 180 degree and you will get the answer, the angle, the value of angle y. Clear. So here is your answers. Since angle x and angle 55 degree are vertically opposite angles, it means angle x is equals to 55 degree. Now we know that angle x and y is equals to 180 degree. Why? Because these are the linear pair of angles. ये क्या हैं आपके linear pair of angles हैं. So if x is 55 degree, so y is 180 minus 55, that is 125 degree. Clear. So it means y is equals to 125 degree, x is equals to 55 degree. Clear. Now angle y and angle z, these two angles are vertically opposite angles. So if angle y is 125 degree, so obviously angle z is also 125 degree. Clear. So now angle y and angle z are vertically opposite angles, it means angle z is also 125 degree because angle y is also 125 degree. Now check it for another figure, figure number 2. Here the two pairs of line is this one. Clear. It means angle, it means 40 degree and angle z. These two angles are vertically opposite angles. So directly z is equals to 40 degree. Clear. Z आपका क्या है, 40 degree है. Clear. So value of z is equals to 40 degree. Why? Because these two pairs, because these are the vertically opposite angles. Now that is your straight line. Clear. And here you have two pairs of linear angle. Here you have linear pair. Clear. So 40 and y, these are the linear pairs. So the sum of angle y and 40 is equals to 180 degree. Clear. So y is equals to 180 minus 40 and that is 140 degree. Clear. So the value of angle y is 40 degree. Why? Because angle y and 40, these are the linear pair. इन दोनों का सम जो होगा 180 degree होगा. So if one is 40, so automatically another one is 140. That's why the sum of 40 and 140 is equals to 180 degree. Clear. So now you have value of angle z, that is 40, y that is 140 degree. Clear. Now as you can see here, 40 plus x and 25, that is your 180 degree angle. Why? Because it's your straight line. Clear. So it's your straight angle and that is equals to 180 degree. So it means 40 plus 25 plus x is equals to 180 degree. Clear. 40 plus 25 plus x is equals to 180 degree. Clear. 40 plus 25, that is equals to 65. 65 plus x equals to 180 degree. Now x is equals to 180 minus 65. 180 से 65 माइनस कर दीजिए. So 10 minus 5, 5, 7 minus 6, 1 and 1, 1. So our answer is 115 degree. Clear. So value of x is 115 degree. इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं. एंगल z इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 40 डिग्री. सो आपका z जो हो जाएगा वो 40 डिग्री हो जाएगा. क्लियर. आपके 40 डिग्री और y जो हैं ये क्या है, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं बिकॉज ये आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. सो इफ इट्स 40, सो दैट इज योर 140. क्लियर. And here you have one more straight angle, this one. Okay, so it means sum of 40 x and 25, that is 180 degree. Clear. So 40 plus x plus 25 is equals to 180 degree. So 40 plus 25 equals to 65 and 180 minus 65, it's 115. It means the value of x angle is 115 degree.
So here is your answer. Pause the video and write down the answer in your notebook. Okay, z is equals to 40 degree because it's a vertically opposite angle. Y plus z equals to 180 degree because it's a linear pair, and y equals to 180 minus 40 equals to 40 degree, and 40 plus x plus 25 equals to 180 degree because it's a straight angle 65, and that is your 115 degree. Now come to the next question, question number 13, and in question number 13 here is the fill in the blanks. The first one is, if two angles are complementary then the sum of their measures is. अगर दो एंगल्स हैं, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो उनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा. If two angles are supplementary then the sum of their measures is 180 डिग्री. अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनका एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा. टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर आर. अगर दो एंगल्स जो हैं वो लीनियर पेयर, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री. ओके, आपके जो दो एंगल हैं, आपके दो एंगल्स अगर वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, इट मीन वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो वो क्या हैं, आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. क्यों? क्योंकि आपके जो लीनियर पेयर होते हैं उसमें 180 डिग्री का एंगल होता है और आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स भी 180 डिग्री के होते हैं. If two adjacent angles are supplementary, they form a. अगर आपके दो adjacent एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, क्लियर. आपके अगर दो adjacent एंगल कुछ ऐसे हैं, क्लियर, तो वो क्या करेंगे, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. इट मीन्स दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, वो एक लीनियर पेयर बनाएंगे, क्लियर. सो आंसर इज लीनियर पेयर. Next question is, if two lines intersected at a point then the vertically opposite angles are always equal. अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे. If two lines intersected at a point and if one pair of vertically opposite angle are acute angles then the other pair of vertically opposite angle are. So if two lines are intersected each other like that, okay, one pair of opposite angle is acute angle, it means it's less than 90 degrees. So obviously another pair of angles are obtuse angle. Okay, obtuse, clear. अगर आपके दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है आपके एक्यूट है, इट मीन्स 90 डिग्री से कम है, सो ऑटोमेटिकली जो दूसरा पेयर होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, इट मीन्स दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल. सो हेयर यू हैव द आंसर्स. ओके, राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 13 एंड दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 13. Now come to the next question, question number 14, and that is your last question. In the adjoint figure, name the following pair of angle. तो आपको क्या करना है इस फिगर में आपको पेयर्स फाइंड आउट करने हैं. Which pairs? First one, obtuse vertically opposite angles. Vertically opposite angles and obtuse vertically opposite angle. It means वो vertically opposite angles तो होने चाहिए, but वो obtuse भी होने चाहिए. It means वो 90 डिग्री से बड़े होने चाहिए. So where is your vertically opposite angles? Here is your two lines, that is your vertically opposite angles. So these two pairs are less than 90 degree, it means these are the acute vertically opposite angle, and this one is your obtuse vertically opposite angles. ये आपके 90 डिग्री से बड़े हैं, so that is your obtuse vertically opposite angles. So our answer is angle BOC, this one, and angle AOD, this one. These two angles are obtuse vertically opposite angles. Okay, which one? Angle BOC and angle AOD. Clear? Check it for the next question. Adjacent complementary angles. It means वो adjacent होने के साथ साथ complementary angles भी होने चाहिए. Clear? So complementary angle होने के लिए adjacent angles का sum जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए. So here we have only one 90 degree angle, this one. Clear? That is also 90 degree, but here we have only one angle. यहाँ पे हमें एक ही angle मिल रहा है, that is OED.
क्लियर, हमें एडजेसेंट एंगल चाहिए. सो हेयर वी हैव वन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल AOB एंड AOE whose sum is complementary, whose sum is equals to 90 degree. So that is your complementary angles. So our answer is angle AOB and angle EOA. AOB and EOA आपके ऐसे एडजेसेंट एंगल है जो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं जिनका सम 90 डिग्री है. नाउ नेक्स्ट इज इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो आपको ऐसे एंगल्स ढूंढने हैं जो क्या हो, सप्लीमेंट्री हो, जो इक्वल भी हो और सप्लीमेंट्री भी हो. इट मीन्स इक्वल होने के साथ साथ वो 180 डिग्री एंगल भी फॉर्म कर रहे हो. क्लियर. सो हेयर यू हैव वन स्ट्रेट लाइन, दिस वन, एंड दैट इज अ 180 डिग्री एंगल एंड दैट इज अनदर 180 डिग्री एंगल. सो हेयर यू हैव टू ऑप्शंस. ओके, जस्ट टेक EOB and EOD. क्लियर. और just take DOC and COB, but here DOC is less than BOC. क्लियर. आपका DOC जो है ये क्या है, BOC से छोटा है, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इक्वल एंगल्स चाहिए. सो आवर आंसर इज EOB, that is your 90 degree angle, and EOD, that is your another 90 degree angle. So these are the two pairs of angles which are equal and supplementary also. Okay. Next question is unequal supplementary angles. So these two angles are your unequal supplementary angles, EOC and COB. क्लियर. दीज टू एंगल्स आर अनइक्वल ऑल्सो एंड सप्लीमेंट्री ऑल्सो. दोनों 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. हेयर वी हैव वन मोर सप्लीमेंट्री एंगल एंड दैट इज दिस वन, दैट इज 180 डिग्री. सो टू पेयर ऑफ एंगल्स आर EOE, दिस वन EOE and EOC, that is your unequal supplementary angle. So choose anyone and write it in your notebook. आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं. Next and the last question is adjacent angles that do not form a linear pair. Okay, आपको ऐसे adjacent angles ढूंढने हैं जो linear pair ना बना रहे हों. Clear. So your answer is AOB and AOE. These two angles are adjacent angles and ये linear pair भी नहीं बना रहे हैं. Clear. Next is EOE and EOD. ये भी आपके क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं. अनदर पेयर इज EOD एंड DOC. क्लियर. ये भी आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये क्या है, कोई भी लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं. सो हियर वी हैव थ्री कंडीशंस, AOB एंड AOE. ओके. अनदर कंडीशन AOD एंड DOC. थर्ड कंडीशन AOE and EOD. Clear. So these are the adjacent angles that do not form a linear pair. So students, here is your answers of question number 14. Clear. Do it in your notebook. Okay, and draw these diagrams also which are in your questions. Clear. And do your work with neat and clean handwriting. This is enough for today. Okay. So students, if you have any confusion in any question, please just inform to me, comment me in the comment section or directly contact to me, and I will provide you a separate video which are based on your problems. Clear. And do your work regularly, and I hope this video is helpful to all of you. For any confusion, directly just contact to me or comment me in the comment section. Clear. And if you like this video, just like, subscribe and share with your friends. Thank you so much. Have a nice day. Take care.